Great to have you together. And let's turn your Bibles to Matthew chapter 6. I want to talk to you today about something that really all of us go through. And all the kids can go to Kids Church. There are any kids. I can't see them. Okay, they're sitting here with it. Okay, all the kids can go to Kids Church. I want to remind you that there's something that we all do. And I think we have all, there's not a single person on earth that don't do this. And this is called worry. Okay, so the title of my message is Don't Worry. Come on, say together. Don't worry. Be happy. No. Don't worry. God cares for you. Amen. Say it. Don't worry. Come on, say it together. Don't worry. Why? Because God takes care of you. How many believe that? God takes care. How many believe that? How many have experienced God taking care of you? प्रभु आपकी आवश्यकताओं को अभी तक संभाला है. And I'll tell you, in the world when things are so much fearful, Russia will send his rocket, when America will send all these wars and everywhere, what will happen, the interest rate is going up, how I will pay my mortgage, what. Do you know there are 4 areas the people most worry? Number one worry, they did research, they found out the biggest worry people have today is about money. Most people are worried कि मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे. So that's the number one worry. The number two worry is more people worried about is also about their future. Many people are worried about their future, what will happen. A lot of them also have a worry about their jobs and security. Will I have my job or not? And the third one is a lot of people have worried about is their health. Unka swasth kaisa hoga, how their health will be. And the last is, another one is relationship. Will my marriage last? Will my children last? People are worried all the time. Married people worried. I've seen married people are worried because they're thinking single hobi to shadi nahi ki. Single people are worried because if I'll ever get worried or not, if I'll get married or not. So there's always people worried, right? Life is always about, rich people are worried because they have too much money. What to do? Poor person is worried because he doesn't have money, right? And everybody's worried. The guys who are educated are worried because they are highly educated. They're not getting a job or security they want. The uneducated people are looking for, man, if I can get anything, I can work. So there's always a worry in life. And I think it's so sad that we live in a world, there's so much worry. But Jesus said, don't worry because I care for you. Hallelujah. Turn your Bibles to the book of Matthew, the 6th chapter. When I come, Matthew chapter 6. You'll go straight to the key points in verse 25. I had worked so much. I had a story about this lady. Would every in the night she will wake up. एक औरत हर दिन रात में अपने पति को उठाती थी. Says, go see somebody's coming in the house. So the husband will get up in the night, go again, look. Then they will like next day, then will come say, nobody's there, just lock the door, everything's fine, come sleep. Next day again. Third day, fourth day, it went on months, weeks, year. And for 15 years, every night, her wife will wake him up to go and look for the house to make sure the house is locked or not. One day, this man walked in the house. And so when this thief came inside the house, the man said, thank God you're here because for the last 15 years, I've been waiting for you. My wife is always waiting for you. And I think a lot of people are today like that, right? And we are worrying for unnecessary. And then when keep worrying, things happen for us. Okay, turn to, here we go. Verse 25. Therefore I say to you, come on, let's read it together. 1, 2, 3. What? Do not worry. About what? Don't worry about life. Okay, मत्ती सुसमाचार 6 उसका 25 का देखते हैं कि उसमें आज का जो शीर्षक है वो बताया जा रहा है कि आज आप चिंता ना करें. चिंता के बारे में आज हम मनन कर रहे हैं. The reason I am to speed is because of the time factor. And I need to have a lot of content, but I don't want to give everything, but we can give as much as. Okay, so here Bible is saying not to worry about life. यहाँ पे बता रहा बाइबल कह रहा है कि आप चिंता नहीं करो अपनी जिंदगी के बारे में. If you get a time, go and read this passage. This is the Sermon on the Mount that Jesus gave, and he gives a very important principles of life. यहाँ पे यीशु मसीह ने सिद्धांत को बताया है कि आपके पास यदि समय होगा तो जाके इस अध्याय को पढ़ सकते हैं. मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय. So whenever in the Bible it says therefore, you got to know what is he talking about.
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस बारे में बातें हो रही है. He said, therefore, he said, do not worry about what life, what you will eat, what you will drink, where you will wear. All of these things I care for you. I will provide for you. Don't और you यहाँ know that? 25वां अध्याय में कहता है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, ये सारी बातों की बातों में वर्णन किया गया है यहाँ पे. Now, I believe that this is the probably most of us are more worried about in life than anything else. बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं चीजों पर ज्यादा चिंता करते हैं. The sad thing is even today many church believers, followers of Jesus also do think the same. और जो मसीह का पीछा करते हैं उनको पास भी यही चिंता होती है. Okay, and so here he says therefore. So whenever he says therefore, you got to go to the previous verse and look at what is the previous verse, right? अच्छा, उसके पहले वाले शब्द में देखेंगे, पहले वाले पद में He said देखेंगे. no man can serve two masters. कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता. Either he will hate one and love other, or be loyal to one and disloyal to other. You cannot serve God and money. कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. Amen. Amen. He said you cannot serve two masters. आप दो स्वामियों की सेवा So he नहीं कर gives you the सकते. reason why people worry. इसलिए बता रहा है, कारण बता रहा है कि क्यों Listen लोग to me. चिंता करते Why हैं. Christians are worrying? The Bible is giving you an answer here. बाइबल बता रही कि लोग क्यों चिंता करते The हैं. reason most Christians are worried because they are serving two masters. कारण ये है कि आप दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं. If you serve two masters in life, यदि आप जिंदगी में दो स्वामियों की सेवा you will करेंगे always live a worried life. और हर वक्त आप चिंता में ही डूबे रहेंगे. The reason you worried because you don't know who is your master. क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका स्वामी कौन है, इसलिए Some आप of चिंता you में have डूबे रहते made हैं. master, you have said, Raj tu kar, Raj tu kar. We just saying, Raj kare. But is he really a king of your life? आज गा रहे थे लेट योर किंगडम कम, लेकिन बहुत सारे लोग के जीवन में राज नहीं है यीशु का. Hallelujah. Is he really the Lord of your life? क्या परमेश्वर सच में आपकी जिंदगी में है? How many of you, I know you cannot say, I lift my hands up and I can do that. But truly, is he the Lord of your life? आप अपने हाथों को उठा के वर्शिप कर सकते हैं और क्या, लेकिन परमेश्वर सच में आपकी जिंदगी में राजा है. See, because there is a test of kingship in your life. और ये यहाँ पे एक चुनौती है, परीक्षा आपके सामने में कि क्या परमेश्वर आपके Jesus जीवन said का you will राजा है. either be loyal to one and disloyal to others. आप एक के साथ विश्वास योग हो सकते हैं और दूसरों के साथ Jesus said you will love one another or you will hate other. बाइबल कहती है कि आप एक से But प्यार you करेंगे, have to दूसरे को तुच्छ जानेंगे. choose. You आपको have to चुनना है. choose whom you will serve. आपकी चुनौती है कि आप किसकी सेवा करना Now, चाहते हैं. most of you sitting in your church, you will say, Jesus is my Lord. बहुत सारे यहाँ जो बैठे हैं वो बोलेंगे कि हाँ, यीशु मेरा परमेश्वर है, He is my Lord, He is my वो master. I मेरा know. परमेश्वर है, वो मेरा But स्वामी है. is He really the Lord? क्या वो सचमुच में आपका परमेश्वर Can है? you can totally say, yes, He's got all control over my क्या life? आप पूरी तरह से कह सकते हैं या यीशु ही मेरा I परमेश्वर है? doubt that. मेरे को थोड़ा Because शक if होता है. I'll tell you, if He really rules, मैं बोलता हूँ यदि आप सचमुच में you परमेश्वर will पर राज never करता worry है about life. तो आप चिंता नहीं करेंगे अपनी You will जिंदगी के never बारे worry में. about your future. आप अपनी भविष्य के बारे में You will चिंता never नहीं worry about your करेंगे. children. आप अपने बच्चों के बारे में You will चिंता never नहीं worry करेंगे. about future. आप अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं Why? करेंगे. Because you know you have King Jesus. क्यों? क्योंकि यीशु आपकी जिंदगी का स्वामी The है. only king in this world who said, don't worry. एक ही है जो कहता है कि अपने कोई बात की चिंता नहीं करो. There is no king in this earth has ever said, don't worry. यहाँ पे जितने भी राजा है किसी ने नहीं कहा कि No चिंता नहीं government करो. has said, don't worry. सरकार भी नहीं कहती है आपको. No authorities have said, don't worry. कोई भी अधिकार के व्यक्ति आपसे नहीं कहता Only कि चिंता one नहीं करो. king, Jesus said, don't लेकिन worry. यीशु जो राजा हुआ है उसने कहा कि Don't चिंता worry नहीं because करो, I can चिंता take नहीं care करो. of you. Don't worry what happens in life. कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, No matter what challenges comes. कोई भी चुनौतियां क्यों ना आए, Don't worry, I'm in control. चिंता ना करे. यीशु ने Hallelujah. कहा. Hallelujah. हालेलुया. So you need to know, don't worry इसलिए because चिंता He ना करें. cares for me. क्योंकि Hallelujah. यीशु आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर आपके It's साथ है. amazing in this passage in 26th verse. Let's go and look. He gives an example of how you should follow. He said, come on, I want you to know why you should not worry. He gives you the reason why you shouldn't worry. अच्छा 26 में कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो कुछ बोते हैं. He compares and said, have you seen a bird? They don't worry. वो चिंता नहीं करते पक्षियां. Hallelujah. How Hallelujah. many of you ever seen a worried bird? कितने लोग देखे हैं जो पक्षी जो बहुत चिंता करता है. Have you ever seen a worried bird? क्या आपने कभी देखा है? Birds never worry. चिड़िया जो है कभी चिंता Do नहीं you know करती.
if the bird's weight is 200 grams, they eat 400 grams of food every day. उनका वजन 200 होता है लेकिन खाते 400 ग्राम है. If their weight is 300 grams, they need 600 grams of food every day. यदि वो 300 ग्राम के हैं तो 600 They don't sow, they don't reap, but God feeds to each one of them. ना तो वो काम करते कमाते हैं लेकिन फिर भी उनका पेट भरता है हर दिन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. And Hallelujah. Jesus said, you are more valuable than those परमेश्वर birds. कहता है तुम उससे बढ़कर हो. Hallelujah. हालेलुया. Come on, church, say hallelujah. हालेलुया. You know, all should be in full-time ministry now. हम सबको प्रभु के पूरे काम You में have to सेवाई learn में to होना trust चाहिए God. था. God can take care of you. और हमको परमेश्वर पर विश्वास करना वो हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा. So, no, I'm just kidding. What I'm saying is you got to learn to hear God. मैं ये बता रहा हूँ Okay. कि आपको परमेश्वर What से God is सुनना है. what is God saying here? Look to the birds of air. उस पक्षियों को देखो. Now, I did a little bit of study about birds. भाई ने कुछ छानबीन की है You पक्षियों के know, बारे में. birds, doesn't matter if there is a flood or a cyclone or something happens right after that, the next morning you'll see the bird still flying. देखा गया है कि पक्षियाँ कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी आंधी तूफान आए, They've वो lost their जानते हैं. houses, they've lost their children, they've lost their eggs, but next day they're still flying. उनके जो घोंसले टूट जाते हैं, अंडे टूट जाते हैं, तोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना होप नहीं खोती हैं. Hallelujah. हालेलुया. The other thing about birds is they get up very early in the morning. और सच्ची बात है कि सबसे वो सुबह उठती हैं How सारी many of you get पक्षियाँ. up in the morning? और सुबह They उठती get हैं up early in वो, the morning, they fly, they start looking for food. और वो उठती हैं और देखते अपने भोजन की तलाश करती है. I was saying, Lord, why you said, look, they were looking. I said, that means I've got to do something about it. परमेश्वर Hello? बोल रहा है कि देखो उसको, मतलब कुछ The तो बोल birds रहा are है, not प्रभु हमें waiting. इशारा Okay, कर रहा God, है. morning has come. Feed me. हम जब सुबह उठते हैं तो मुंह खोलते हैं, बोलते हैं, प्रभु खिला हमें. No. The birds have to look for it. पक्षियों को देखना पड़ता है, उनकी That भोजन means की there तलाश is a करना work पड़ती है. involved, right? कि A lot of उस- people think, oh, I've got to just serve God, so I don't have to. No, you have to work for it. आपको इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा. Now, a lot of people think working means I've got to be like the other people, work 8 hours, 10 hours a day, work. No, you don't have to work that way. God didn't say to you to work like that. आपको मर्जी काम करने की जरूरत नहीं है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, लेकिन परमेश्वर आपकी You know सहायता why करेगा. most people are struggling? Because we are not growing. बहुत सारे लोग को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, If I ask you, have you grown your skill? क्योंकि आपकी जो शिक्षा प्रदान हुई है उसमें आप ध्यान नहीं देते. Have you grown in your promotion in your company? क्या आपको पदोन्नति मिली है You know why काम में? people are not promoted? पता कि काम में आप लोग को ऊंचा स्थान नहीं मिला है. Because why would I promote someone who has not done anything more? He is not growing. I know, but if I'm a company owner and I see this guy not performing, why should I give him more wages? Why would I give him more positions? Because I am not getting any return out of that person. यदि मैं Right? कंपनी का एक मालिक हूं तो मैं आपको क्यों पैसा दूं यदि आपने Many काम कुछ Christians, किया ही नहीं है काम we में. are not educating ourselves, we are not learning, we are not getting skilled up in whatever profession, whatever job God has called us. We are not growing spiritually, we are not growing mentally, we are not growing relationally, we are not growing in our people skill, we are not learning all this communication skills. So when we don't grow, we stay in the same place. हम कोई भी एरिया में उन्नति नहीं कर रहे, ना अपने आप को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. जहां हम जो स्थान में है, जहां जो कंपनी में, ना ही हम उस पे फोकस कर रहे हैं, So ना ही हम आगे बढ़ रहे हैं. Jesus said, look to the birds of the air. यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि उन पक्षियों पर ध्यान करो. Now, do you know what is the value of the bird? आपको पता है कितना मूल्य है पक्षियों का? Jesus said, he says in Luke chapter 12, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 कहता है, in verse 6 and 7, 6 और 7 कहता है, are not 5 sparrows are sold for 2 pennies? क्या वो पक्षियां क्या 1-2 पैनी में नहीं मिलती हैं? Hallelujah. हिंदी में क्या लिखा है? It says Luke 12. It says 5 sparrows. Have you seen sparrows? Sparrows are everywhere, right? क्या In 2 every पैसे की country. 5 गौरियां नहीं बिकती? So in 2 cents, how many gorayas? How many sparrows? 5. 5. So divide that. How much will be the value of that birds? They are not even a 0.5 cents, right? So that is what he's saying. They are equal to 50 cents each sparrow in another language, right? I'm just simplifying it. And it says those sparrows, that is, he said, look to aren't they sold for that? But he says, don't be afraid, for you are more worth than the sparrows. इसमें बता रहा है कि जो गौरैया हैं उनका 5 सेंट भी उनका कीमत नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उनको भी बहुमूल्य जानता हूँ.
उनको भूलता नहीं हूँ। And I said, hey? He said, yet not one of them, even one sparrow, are not forgotten by God. और एक भी ऐसा पक्षी नहीं जो परमेश्वर को भूलता नहीं है। Doesn't it say? Not one of them are forgotten by whom? By my Creator, my King. He said, man, that little 50 cents, I still take care of you. He said, you are more valuable. I can take care of you. आप बहुत बहुमूल्य है, परमेश्वर उस पक्षी से ज्यादा बहुमूल्य है, उस गौरैया से ज्यादा बहुमूल्य है। And then he also compares with the hair. और फिर परमेश्वर बालों से भी तुलना करता है। He said, women, you are very blessed. You have a lot of hair. स्त्रियों के पास बहुत सारे बालें हैं। He said, the numbers of hair. He said, not even one of them fall. और जितने बाल है उसमें से एक भी गिरता नहीं है। And some of us, we have lost a lot of hairs, thank God, but God still loves us, right? काफी लोगों के पास बाल But हैं what कि is saying, परमेश्वर प्यार but God करता is है। saying, hey, you are valuable than those birds of air. लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि आप बहुत बहुमूल्य हैं, उस पक्षियों से भी बढ़कर हो आप। Hallelujah. Hallelujah. So why should I not worry? तो मैं क्यों चिंता नहीं करूं? Because I am valuable. क्योंकि मैं बहुत बहुमूल्य हूं Tell परमेश्वर की anybody, say, I नजरों am में। valuable. मैं बहुमूल्य हूं। I don't have to worry. मुझे चिंता करने की The जरूरत other नहीं। very important thing that I believe in this passage saying is that it says your father, he is your father who knows all your needs. और यहाँ बता रहा है कि परमेश्वर तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है। Hallelujah. हालेलुया। Father who knows all you need will provide your needs. Someone in your father knows all the need. कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर पिता जो है सब You कुछ know, I प्रोवाइड think करता है। most of us struggle in our trusting with God and our relationship with God is because most of you don't know God as your father. बहुत सारे लोगों को परमेश्वर पर विश्वास करना मुश्किल होता है क्योंकि आप नहीं जानते हो जैसे कि वो एक पिता किस जैसे है। Now let me. How many of you are father? Lift your hand if you're father. कितने लोगों के पास पिता है? Okay. All fathers will know when they have a child. हर एक पिता को पता होता है जब उनके पास एक बच्चे होते हैं। How amazing they are. How कितने प्यारे होते you हैं love बच्चे। them as a part of you. और They're उनको flesh आप of बहुत flesh. प्यार करते हैं। Right? And you love them. You'll do anything to love them and keep them, to bless them, to provide for them, to protect them. उनकी सुरक्षा के लिए आप सब कुछ करना चाहेंगे, उनको देंगे खरीद के, जो भी चीज चाहिए उनकी हर एक चीजों पे आप ध्यान देंगे। So God says in His Word, प्रभु ने उसके वचन में कहा है, you are more valuable than birds. उससे भी बहुमूल्य हो आप। And your heavenly Father cares for you. और आपका स्वर्गीय पिता आपकी रक्षा And करता therefore है। don't worry about life. इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपकी सहायता करने के लिए है। Hallelujah. Hallelujah. Don't worry about life because I care for you. अपनी चिंताओं अपने जीवन के बारे में चिंता ना करें I love क्योंकि this passage परमेश्वर in आपका Romans सहायता करने वाला है। 8:32. Romans 8:32 says, Romeo he who 8. did not spare his own son but gave up for us, will he not also allow graciously give us all things? Say with me, all things. रोमियो 8:32 कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। How many know that God can provide things for you? कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर He सकता can है। get you car, house, things. Whatever things you need, God can give you. God can do that. You're saying, Pastor, it can't happen. I can tell you many stories of my life where things have given to me because they come. When you pursue God, when you love God, when you put Him, things come to you. Hallelujah. Hallelujah. Things come. How many know that? Things come. Gold come to you. You don't need to worry. Gold come to you. Pastor, yeah, people give you gold. People will give you diamonds. People give you silver. Things will come. You don't have to go after them. They come. Which one would you like? You want to go and earn for it, or you want somebody give to you? सारी वस्तुएं आपके पास में आएगी, आप जो नाम ले लीजिए वो आपको परमेश्वर दे सकता है। Hallelujah. Hallelujah. So all you need to do is to trust on the Father. आपको सिर्फ यही करना है कि परमेश्वर पर विश्वास रखना है, And if you trust भरोसा Him, रखना है। verse 27 says, don't worry. He says, why not to worry? Because he said, those worries cannot add a single hour of your life. क्योंकि चिंता करके आप एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते हो। What is God saying? Worry is useless. बाइबल क्या बोलता है कि चिंता जो है वो बेकार है। In fact, worry is bad for your health. और जो चिंता जो है वो आपके शरीर के Do लिए you know नुकसान करती in है। our Western country, more people are worried about life and creates a certain kind of chemical in your body that causes sickness in your body. आपको पता है इन देशों में लाई की काफी जो चिंता करते हैं उनके जीवन में उनके शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। Somebody said worry is like a rocking chair.
कई लोगों ने कहा है कि वो चिंता जो है वो जो चट्टान पे एक चेयर होता है उसके जैसे कुर्सी जो रख देते हैं चिपका हुआ है, You are not moving any forward. उसको कहीं निकाल भी नहीं सकते, वो You ऐसे get up in the चिपका हुआ morning, है। you're thinking about immigration. और जहाँ आप सुबह उठते हैं तब भी आप इमिग्रेशन के In बारे the में night, you're सोचते thinking हैं, about immigration. जहाँ कहीं भी जाए वो आप इमिग्रेशन के बारे में सोच You're रहे thinking हैं, about your future. अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, Back future. In the night, you think future. जो बीता हुआ Worry गया फ्यूचर उसके बाद पास्ट you के know, if बारे you में। worry in life, it is a sin for a believer. चिंता करना सबसे बड़ी पाप है। Listen to me, let me tell you. Every time when you worry, जब कभी आप चिंता करते हैं, you're telling God, God, you are not worthy. You're not capable to take care of me. आप परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर आप इस योग्य नहीं कि आप हमारी You're चिंता telling करें। God, you don't have power, you don't have strength to take care of my needs. प्रभु आपके पास तो सामर्थ्य है ही नहीं, शक्ति है I नहीं, have कुछ to नहीं work कर this out सकते। with my mind. अरे मुझे सोचना पड़ेगा। You know, every time you worry, you're making yourself greater than God. और जब कभी आप चिंता करते हो, आप अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझते हो, Because you're बनाते telling हो। God, you have no capacity. परमेश्वर आपके पास तो योग्यता है ही नहीं, You can't take care of me. आप मेरी रक्षा नहीं I कर have to सकते, care मदद for नहीं me. कर सकते। I have to मुझे take care अपना of my चिंता family. करना पड़ेगा, I have to take care of my money. मेरे परिवारों I का, have to take care of my future. मेरे पैसों I का, have to take मेरी care of my marriage. सब चीजों का, शादियों का, सब कुछ का चिंता मुझे ही करना I have to पड़ेगा। take care of finding परमेश्वर right wife for me, husband for me. सही पार्टनर, सही व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। So worrying is a sin. So, चिंता एक सबसे बड़ा पाप है। Now look at verse 28. It says in 28, it says, 28वां में देखिए। why do you worry about clothes? Now, ladies, very important. This is for a Bible word, especially for ladies. You say, why worry about what? Clothes. Don't go shopping too much. Why worry? क्यों चिंता करते Why हैं कि क्या compare yourself पहनोगे? with उसके पास में मेरे को भी चाहिए? No, you don't need to worry about others. हाँ, तो हाँ, यहाँ पे औरतों के बारे में बताया है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ज्यादा कपड़ों का डिमांड करती See है ना। how the flowers of the field grows. They do not labor or spin. Yet I tell them that Solomon in his splendor wasn't able to dress one of these. 6:28 कहता है, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनसे किसी के समान And वस्त्र then he पहने said, हुए ना था। then this is how God has clothed with grass the field, which is here today, tomorrow is thrown in fire. Will he not much more clothe you with you of little faith? इससे जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल झाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो क्यों करना पहनाएगा। Now, Jesus was telling to his disciples because they have left everything and they are following Jesus. यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं, Because all these 12 people have left their job, their businesses, now they are following Jesus. और ये जो 12 शिष्य जो थे वो यीशु के पीछे चल रहे थे और अपने कामों को छोड़ के, And now they don't get new clothes. और अभी उनके पास नए कपड़े नहीं आ रहे हैं। Food is probably coming to them. खाना तो आ रहा है, But I think they probably are more worried and saying, man, the shirt has been very old. I need to get a new shirt now. 3 years, same shirt. Same pants. I need to change now. बट कहीं ना कहीं चिंता उनको खाए जा रही थी। So Jesus is saying, don't worry about clothes. तो प्रभु ने कहा कि अरे कपड़ों का चिंता नहीं करो आप, I will provide for you. मैं तुम्हारे लिए प्रदान He करूंगा। said, look at how I have dressed the whole creation. देखो सारी दुनिया को मैंने कैसे वस्त्र पहनाया हुआ है। He says to them, you little faith, he said. हे अल्प विश्वासियों, कहता है यीशु। 4 times in the Bible, Jesus said to people, his disciples, you little faith. 4 बार ऐसे शब्द आए हैं, हे अल्प विश्वासियों। When they were in the water, Peter was walking in the water and he was about to sink, and then he lifts him, and then Jesus says to Peter, you little faith. पता है जब पतरस पानी में चलने पर था, वो डूबने ही वाला था, तब यीशु उनसे कहता When है they were in the अविश्वासी। boat all together, and then suddenly a big storm came, they were about to sink, they go out and wake Jesus up, and Jesus said, you little faith. और सब साथ में थे एक बार बोर्ड में, तो उस समय भी लोग उसका शिष्य डर गए, तब यीशु मसीह वहां पे यूज करते हैं, हे अल्प विश्वासियों। Why was because the little faith means they were lacking faith. क्या बोल रहे हैं कि उनके पास विश्वास की कमी थी। No, he's saying, come on, can't you trust your father that your father in heaven can take care of your needs? अब वो कह रहे हैं कि तुम क्यों विश्वास नहीं करते, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हें पहना नहीं सकता, वस्त्र नहीं दे सकता, खाने को नहीं दे सकता। Can you trust in the root problem for the worry is when you don't really know God, and when you don't know God, you will always doubt God.
और विश्वास आप नहीं कर पाते क्योंकि आपको परमेश्वर के पर ट्रस्ट नहीं है और आपका जो जड़ मजबूत नहीं कि वो आपके लिए सहायता प्रदान कर See, सकते हैं। one of my vision our church is to help people know God. और दर्शन ये है कि लोग यीशु को उसके I don't want you to know करें। religion. मैं धर्म पर विश्वास नहीं करता। I want you to know your Father in heaven. मैं चाहता हूँ कि वो स्वर्गीय पिता को जाने। Get to know God means to get to know the Father and His character, His nature, His life. और उसके स्वभाव को, उसकी ताकत को, उसके सामर्थ्य को, उसको जाने की कौन है वो परमेश्वर। You know, when you are afraid in life, जब आप जीवन Why में you're चिंता worried करते in हैं, life? क्यों चिंता करते हैं जिंदगी में? when you don't trust Him. जब आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। Have you seen small children, small babies? क्या आपने छोटे बच्चों को देखा है? They never worry. वो चिंता नहीं करते। No child is born in this earth worries about life. कोई भी बच्चा जब पैदा होता है वो चिंता नहीं करता, But the same child is taught to worry. लेकिन उसे ही बताया जाता है कि ये चिंता कैसा करना है। The child learns from other child how to worry. और एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है कि The कैसे child looks चिंता to करना mom है। and dad, they are worried, so he is worried now. और माँ बाप जब करते हैं तो बच्चा देखता है और वो भी Because चिंता करने लगता child है। is learning from the parents how to worry. और बच्चा है माँ बाप के द्वारा सीखता है। So how do I grow in my faith? तो हम कैसे ये विश्वास में बढ़ सकते हैं आगे? Get to know the Father. तो उस परमेश्वर को जाने। How do I get to know the Father? कैसे हम परमेश्वर को जान सकते हैं? I get to know through His Word. उसके वचन के जरिए हम खुदा को So जान when I सकते read हैं। His Word, जब हम पढ़ते हैं वचन को I get to know the Father. तो हम परमेश्वर को जानते हैं। When I get to know the Father, जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं I can trust Him. उस पर भरोसा कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Turn to Philippians 4:9. फिलिपियों की पुस्तक 4 उसका 9 He said, we पढ़ेंगे। all know, my God shall supply some needs. Come on. He says that my God shall supply many needs. Come on, what do you say? All. My God shall supply almost my needs. Now what is this? All needs. According to whose riches? Whose riches? His riches. Now we all know Bible well. But do we really believe those verses? यहाँ पे कहता है मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित आएगा यीशु मसीह में हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यहाँ पे नहीं कहता एक घटी को और कुछ घटी को, पर सब घटियों को पूरा करेगा लिखा Hallelujah. है। हालेलुया। God is able to provide every need. परमेश्वर हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। Let me give one story and finish it up. मैं कहानी बता के फिनिश There was a करूंगा। prophet in the Bible called Elijah. एलिजा करके एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था बाइबल में। And this story is found in First King. When you go and read this, you'll find this amazing story. वो पहला राजा में पाया जाता है। And this king was, he was against King Ahab. God told him to go and give a message to Ahab. आहाब जो था, किंग आहाब के पास He was a wicked king. आहाब किंग जो था वो बहुत दुष्ट था। And God gives a message, he says, and then he goes and tells them there will be no rain for 3.5 years. और परमेश्वर एलीशा को बोलता है कि जाके आहाब से कह दे कि 3 साल तक वर्षा नहीं होगी। And he said, because I said there will be no rain. क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए पानी नहीं गिरेगा। And then on the stories in 17th chapter, he goes on and he says to the king, and then he goes to a creek where he will be provided by crow. पहला राज्य 17 में लिखा है कि वो एक जगह में जाता है, नदी के किनारे, and then नदी के किनारे जाता है, he gets provided food every day. और उसको हर दिन उसको भोजन प्राप्त होता है। Now who's bringing the food? कौन लेके आता है भोजन उसके लिए? Do you know crows take other people's food and eat? पता है कौवा जो है दूसरे के भोजन को उठा लेता और खाता है। New Zealanders, you guys don't know that, but if you've been, I don't know, Fiji they have crows. Fiji में कौवा है? No, you guys don't know. Okay, only in India. इंडिया में एक काला प्रकार का एक पक्षी है, उसको कौवा कहते It हैं। will come to your house, pick up the food, run away from you, fly out, right? और अब यदि देखेगा आप खा रहे हैं तो आपके प्लेट से लेके भाग जाता है। And imagine every day from the king's table, food was supplied to this prophet. और जो एलीशा जो नाले के किनारे था वहाँ परमेश्वर कौवे के द्वारा राजा के टेबल And से then उसको God tells वहाँ him, पे now it's प्रोवाइड time for करता you to है। move to other place now. Now God tells him to move to other city. और तब परमेश्वर कहता है इस स्थान को छोड़ के तू दूसरे स्थान में जा। And when you go to Safara, there is an old lady who's collecting sticks. वहाँ पे एक लड़की जो बूढ़ी लेडी जो थी, औरत थी, वो लकड़ी बीन रही If थी। you look at verse 12 of the 17th chapter. 12 में कहता है, 12 अध्याय का 17 का 12 कहता है,
उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैंने 2 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ, और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम खाएं फिर मर जाएं। So she's saying, I don't have anything to give to you. I don't have flour. I have very little just for me and my son. We will eat. This is the last source. So ये विधवा लेडी कहती है, एलीशा को मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़े से आटा है। So this man of God says, I want you to do this first. Bring it to me. तो परमेश्वर के दास कहते हैं कि वो उसको पहले तुम मेरे लिए लेके आओ। And when she does it, और तब वो जब करती है when she ऐसा, obeys that, जब वो आज्ञा का पालन करती है, look at verse 14. 14 में देखेंगे, The jar of the flour will not be used, and the jar of the oil will not be run dry until the day of the Lord will send the rain. और जब तक वर्षा वापस नहीं हुई, ना उसका तेल कम हुआ और ना ही आटा उसका आटे में कमी हुई। But to do that, she has to do what is called obedience. बट उसको वो चीज करना पड़ा जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। I believe if you obey God, then you will experience the blessings of God. जब आप आज्ञा का पालन करेंगे, तब परमेश्वर की आशीष को आप देखेंगे। You know, Jesus said, "Don't worry." परमेश्वर ने कहा, चिंता नहीं In करो। that chapter, if you read there 4 times, he said, "Don't worry." सेम अध्याय में 4 बार कहता कि चिंता नहीं करो। Don't worry, don't worry, don't worry. चिंता ना करो, चिंता ना करो, Then चिंता ना करो। he ends up with a very important word. लेकिन अंतिम में हम देखते हैं, He says in verse 33, but he says, do something that is to seek my kingdom and righteousness. लेकिन मत्ती में 6 उसका 33 कहता है कि तुम पहले उसके धर्म में राज की खोज करो। So what do us? We stop worrying, but we start seeking. हमें चिंता छोड़ के हमें उसको खोजना है। He said, what do you seek his kingdom and his righteousness? जब हम उसके राज की खोज करते हैं, So what is kingdom? उसका राज क्या है? That means having king in your life. मतलब कि उस राज्य का राजा आपके जीवन में आ जाता है। When his kingdom comes in my life, जब उसका राज आपके जीवन में आ जाता I है, will see his abundant provision in my life. तब मैं देखता हूँ उसकी बहुतायत की आशीष को अपने जीवन में। In Matthew, Mark, Luke and John, Jesus used that word kingdom for more than 130 times. इन चारों समाचार में 130 से भी ज्यादा देख सकते हैं राज किंगडम आया What है। was he saying? Come on, pursue my kingdom. कह रहा है कि मेरे राज का पीछा करो। Let me ask you, is Jesus the king of your life? क्या यीशु आपके जीवन का राजा है? Is he king of your family? क्या आपके परिवार का Of your राजा है business? यीशु? आपके व्यवसाय में? If he's not, then today you need to make him the king of your life. यदि नहीं है तो आज आपके पास मौका है कि आप उसे राजा बना ले अपने जीवन का। Hallelujah. हालेलुया। Is he? And then he says, pursue righteousness, seek और righteousness. कहता है कि उसके धार्मिकता की खोज करें। What does that mean? उसका मतलब क्या है? Righteousness means right doing. राइचियसनेस का मतलब है कि सही काम को करना। धार्मिकता का मतलब है सही Live से according जीना, to my word. उसके वचन के मुताबिक जीना। When you do that, जब हम ऐसा करते हैं, all the things will be added to you. सब कुछ हमारे पास आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Don't worry. चिंता ना करें, God cares for you. प्रभु आपकी रक्षा सहायता करने वाला परमेश्वर।